Here they are saying a particle is moving in a circle with a constant speed. So again speed is given. ठीक है, so चलो mention कर लेते हैं हम whatever the given is there. So here like जो भी हमारी given values है, एक तो speed दी है, so v is equals to nothing but 15 meter per second. Second thing radius दिया है 2 meter. They are asking you to determine the centripetal acceleration. ठीक है, ये आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है बच्चा. ठीक है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो यू विल मेंशन centripetal acceleration. Okay, they are asking you centripetal acceleration. So how to determine the centripetal acceleration? Look, you will be determining in such a manner. A is equals to v square by r. ये फॉर्मूला लर्न कर लो आप. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है, v स्क्वायर बाय r. सो इफ़ यू नो द फॉर्मूला इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक 15 का स्क्वायर और इधर 2, 15 का स्क्वायर इज 225 डिवाइडेड बाय 2. सो कैन आई से इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है it will be nothing but 112.5 meter per second square. Clear है? Yes. So this is the solution of the answer. So this is what you are supposed to do. Okay. Thank you.